English का third chapter, The Little Girl. Fine. So the chapter name is The Little Girl. It is chapter number 3. This we will do later on. Once we go through the session, afterwards we will do this. Okay. But before you read, okay, fine, we'll do it now only. So they have asked us questions. That do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Okay, कि आप जब यंग थे, मतलब डू यू फील योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर? कि जब व्हाट डू यू फील लाइक व्हेन यू वर स्मॉल, तभी आप आपके पेरेंट्स को अच्छे से जानते थे, दैट और एल्स नाउ यू नो योर पेरेंट्स बेटर? सो दे आर आस्किंग यू ऑल क्वेश्चन. सो व्हाट डू यू गाइस थिंक? Anyone, Daksh or Parth, anyone can answer. Yes, now. Now, yeah, right. You know them now better. Why do you guys feel so? बराबर है, दक्ष का बराबर था. That now, why do you feel बच्चा now? दक्ष, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अब भी आपके पेरेंट्स को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हो, ना कि तब जब आप छोटे थे? Why do you Because feel? now I understand what they are saying. Yeah, बरोबर, because now what happens, now as you grow up, you become mature, and now you know that okay, whatever they are doing is for our benefit, वो हमारे अच्छे के लिए ही है. And the time when you were young, आपको उतना नहीं समझता, एक maturity level थोड़ी सी हमारे, जब हम छोटे होते तब थोड़ी कम होती है हमारे में. So हमको लगता है अरे पेरेंट्स चिल्ला रहे हैं हम पे. But now when you grow, and when you grow, you understand that no, they, whatever they are doing is for our benefit. So over here you can write your experience, that yeah, I feel that I understand my parents better now than when I was younger. And you can give an example if you want. See, यहाँ पे लिखा है, perhaps you now understand the reason for some of their actions. Can now you know why they are reacting like that, because एक आप लेवल पे पहुंच गए हो when you are mature enough, but when you were small you didn't knew that reason. So you can write it down. Okay, समझा ये वाला क्वेश्चन दोनों को? Yes, ma'am. Okay, next. Second one is, the story is about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding. Will probably find an echo in every home. ठीक है? That story which we are going to learn today, the little girl, वो भी वैसी है. The girl name is Kezia, and she thinks that her father is very much strict and very much boring. तो वो क्या करती है, वो है ना दूसरे पेरेंट्स के साथ अपने फादर को कंपेयर करती है. But later on, at one point of time, she realized that no, my father is actually very helpful towards me, and very क्या बोलते हैं कि मतलब इतना strict नहीं है, and whatever he is doing for my benefit. So later on she understands that. Okay, so यहाँ पे वही बोला है that ये सिचुएशन सबके साथ होता है. That this story about a little girl whose feeling for a father change from fear to understanding. पहले वो अपने पापा से डरती थी, but now she tries to understand them. उनको समझना, वो समझना चाहती है. So that will probably find an echo in every home. That this happens with us also, right? At one particular time when our parents scolds us, या कोई भी छोटी चीज के लिए डांट लिया, तो हम लोग फटाक से क्या कर लेते हैं, बुरा मान जाते हैं. बट अगर हम बाद में समझने की कोशिश करें कि उन्होंने क्यों ऐसा बोला या उनका इंटेंशन क्या होगा, तो यू विल ऑलवेज फाइंड कि उनका इंटेंशन हमेशा प्योर होता है. वो जो भी करना चाहते हैं, दैट इज फॉर योर बेनिफिट ओनली. ऐसा नहीं है कि उनसे आपको कुछ प्रॉब्लम होगा वैसा. ठीक है, सो ये आपको यही बताया दैट दिस विल फाइंड एन एको इन एवरी होम, के सबके घर में ऐसा सिचुएशन होता रहेगा. ठीक है, नाउ विल स्टार्ट विद द चैप्टर. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Okay. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye, father. Okay. तो उसके लिए वो फादर का फिगर कैसा था? द वन टू बी ऑलवेज फियर्ड, कि वो हमेशा, वो फिगर मतलब यहाँ पे फिगर मतलब क्या, उसके डैड के बारे में बताया. तो वो डैड से हमेशा डरती थी, एंड शी
always used to try to avoid him. Okay, every morning while going towards work, जब वो ऑफिस के लिए जाते थे ना, तो उससे पहले he used to come, he used to come at her मतलब उनके रूम में आते थे ये लिटिल गर्ल के, and he used to give him a casual kiss. मतलब इससे पता चलता है कि उनको कितना अफेक्शन था उनकी डॉटर के लिए. To which she responded with goodbye father. तो वो क्या रिस्पॉन्ड करती थी? Goodbye father. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. So she used to have a sense of relief कि अपन बोलते हैं ना हाश हो गया, ऐसा खत्म हो गया. अगर अपना एग्जाम हो जाता है टाइम पे तो वी आर लाइक हाश हो गया. सो ऐसा रिलीफ उसको कब होता था? जब उसको पता चलता था कि जो उसके डैड की कार है, कार यहाँ पे बच्चा लोग यू कैन से कैरियज. ओके, कैरियज मतलब जो व्हीकल है उनकी डैड की वो. तो जब उनकी कैरियज फेंटर एंड फेंटर मतलब क्या, जब दूर जाती थी उनकी गाड़ी, मतलब जब उसको पता चलता था कि या डैड घर से निकल गए हैं, तब उसको क्या एकदम सेंस ऑफ रिलीफ मिलता था. समझा यहाँ तक? चैप्टर फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पैराग्राफ समझा बच्चा ने? Yes, ma'am. Yes, Uh, ma'am. okay. Second, in the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my sleepers. Okay, तो ये तो हम लोग ने सुबह का देखा that when he used to go for work, she used to have a sense of relief. But the time in the evening when he used to come back to the home, तो वो क्या करती थी? वो चुपके से ऐसे स्टेयरकेस पे खड़ी रह के देखती थी, उनका आवाज सुनती थी. तो ही हैड अ लाउड वॉइस. ओके, उनके डैड का वॉइस थोड़ा लाउड था, एंड वो जैसे ही आते थे घर पे, ही वाज लाइक ब्रिंग माई ट्री इन टू द ड्रॉइंग रूम. हैज नॉट द पेपर कम येट. तो वो ऐसा पूछते थे कि मेरा टी लेके आओ ड्रॉइंग रूम में, एंड हैज इन द पेपर कम येट. एंड मदर को, जो उनकी मॉम थी, उनको वो बोलते थे दैट मदर गो एंड सी इफ माई पेपर इज आउट देयर, कि देखो आपके पेपर आ गया है या नहीं, एंड आते वक्त मेरी स्लीपर्स भी लेके आना. तो ये सब जो लिटिल गर्ल है वो स्टेयरकेस पे खड़ी रह के सुनती थी. फाइन. Kesia, mother would call to her. So now we understand the name of the girl. वो छोटी जो लड़की है उसका नाम है Kesia. So the very first character over here we have learned is the little girl जो Kesia है. The second is her father, and the third यहाँ पे हमने देखा कि जो Kesia है उसके डैड की मॉम मतलब उसकी दादी, वैसा. So Kesia, mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boot. तो जो उसकी मॉम थी कीजिया की, वो उसको बोलती थी कि if you are a good girl, then please come down and take off father's boot. अपन करते हैं ना, डैड ऐसे थक के आते तो अपन कभी कभी सॉक्स निकालने में हेल्प कर देते, तो वैसे ही उसकी मॉम भी उसको बोलती थी that if you are a good girl, please come and help dad to remove his boots. Slowly, the girl would clip down the stairs, move slowly still across the hall, and push open the drawing room door. तो वो धीरे धीरे आती थी स्टेज से नीचे, एंड धीरे से हॉल में एंटर करके फिर ड्राइंग रूम में वो जाती थी. ठीक है. By the time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. So till the time she used to enter the room, the dad, he was wearing spectacles, and he looked into, like वो खीजिया को ऐसे देखते थे ना जिससे खीजिया डर जाती थी. उसको लगता था कि कितना टेरिफाइंग लुक है, कितना डरावना लुक है वैसा. Well, Kezia, hurry up and put off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? Okay, तो उसके डैड क्या पूछते थे कि कीजिया जल्दी जल्दी आओ and please help me to remove these boots. And then वो उसको पूछते थे that have you been a good girl today? मतलब कि अपन बोलते हैं ना आके कि आपने मम्मी को परेशान नहीं किया ना, आप आज अच्छे से behave कर रहे थे ना. So in a similar way, his dad was also asking Kezia that have you been a good girl today? तो वो क्या रिप्लाई देती थी? आई द डोंट नो फादर. ओके, अभी ये कैसे हो गया? दिस इज कॉल्ड एज स्टैम्परिंग. ओके, हम जब स्टैम्परिंग करके बोलते हैं ना, अटक अटक के बोलते हैं, हम कब ऐसा बोलते हैं बच्चा लोग? किसके सामने हम अटक अटक के बोलते हैं? जब हम मैम किसी से जब
मैम जब हम हाँ, किसी से डर के बोलते या जैसे अगर हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हो गए या कोई टीचर हो गया जो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो उनके सामने बोलने से पहले हम डर जाते हैं, राइट? तो वो भी अपने फादर से जब बात करती थी तो वो ऐसे ही डर जाती थी। तो उसके डैड ने जब उसको पूछा दैट हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, शी इज लाइक आई डोंट नो फादर, लाइक आई डोंट नो, वैसा। You did don't know. If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. तो उसके डैड भी उसने जैसे बोला उसी वे में रिप्लाई करके बोलते थे that if you stutter, as I said, stutter का मीनिंग लिख लो बच्चा लोग। stutter means stammering, और आप लिख सकते हो to speak with pause. ओके, मीनिंग्स भी साथ में लिखते जाना so that it becomes easy for you, कि जब आप चैप्टर रीड करोगे ना तो आपको इजी पड़ेगा। सो उसके डैड बोलते थे इफ यू कीप ऑन talking like this, then your mother will have to take you to the doctor because this is not the right way to talk. She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father because then she was trying so hard to say the words properly. ठीक है, कि वो कभी ऐसे किसी और लोगों से जब बात करती थी ना तो वो कभी ऐसे पॉज लेके बात नहीं करती थी, but when it was about his father she always used to stutter, and she used to try hard, but then she always used to talk while taking pauses. What's the matter? What are you looking so wretched about? Okay. Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kesia, carry my teacup bag to the table carefully. Okay. उसके डैड पूछते that what's the matter? Why are you looking wretched about? Okay. मतलब उसके डैड उसको पूछते हैं that what happened? Why are you looking wretched is unhappy. Okay. तो उसके डैड उसको पूछते हैं what is the matter? Why are you looking unhappy? बट वो कुछ रिस्पॉन्ड करती नहीं है। तो फिर वो उनके वाइफ मतलब कीजिया के मॉम को बोलते हैं दैट आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। मतलब क्या ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड मतलब क्या, लाइक यहाँ पे लिखा है देखो मीनिंग, अबाउट टू कमिट सुसाइड। मतलब व्हेन अ पर्सन इज अबाउट टू कमिट सुसाइड वो कैसे डर जाते हैं। इन द सेम वे कीजिया यूज्ड टू गेट स्कैर्ड। तो वो उनको बताते थे, जो उसके डैड है वो मदर को बोलते थे दैट आई विश यू, कहा गए हम लोग, या आई विश यू टॉट द चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, दैट शी शुड नॉट लुक दैट स्कैर्ड और अनहैप्पी. Here, Kesia, carry my teacup back to the table carefully. And then again, father orders Kesia that please carry my teacup back to the table carefully. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. So यहाँ पे father का description according to Kezia दिया है, that what Kezia used to feel for his father, that he used to think that he was so big in the sense हम लोग बोलते हैं ना so huge ऐसा, his hands and his necks, especially his mouth when he yawned. तो उसको कैसे लगते थे उसके dad, the hands were used, the neck was used, and when he used to yawn, तो mouth भी उसको ऐसा बड़ा लगता था, तो he used to feel like my dad is a big giant ऐसा. Normally it happens ना, बच्चे लोगों को ऐसा लगता है कि अरे कितने ह्यूज है, कितने जाइंट है ऐसे, तो उसको क्योंकि वो छोटी थी ना तो उनको ऐसे लगता था कि कितने ह्यूज है मेरे डैड वैसे. Thinking about him alone was like thinking about a giant. Next, on Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. Okay, so what Sunday afternoons grandmother used to do, वो कीजिया को भेजते थे कहाँ पे, to have a conversation with father and mother in the drawing room. So she used to send Kezia that go have a talk with your father and mother. But whenever Kezia used to enter, what she used to see, that mother was always busy reading, okay, and father he was always sleeping on the sofa. यहाँ पे लिखा है देखो, stretched out on the sofa, his handkerchief on his face,
face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. मतलब क्या, he was basically sleeping on the sofa and face पे वो handkerchief से अपना face ढक देते थे, and he used to sleep soundly and snoring. What do you mean by snoring, guys? Ubas. Yeah, उबा, या जो हम उबासी नहीं बचा, उबासी मतलब यॉर्निंग। ये देखो यहाँ पे जो यॉर्निंग देखा ना हम लोग ने, व्हेन ही यॉर्न, उसको उबासी बोलते हैं। ऐसा हा ऐसा करते हैं ना, नींद आता है वैसा। स्नोरिंग इज ये क्या बोलते हैं अपन, ऐसा आवाज करते हैं ना ये लोग सोते वक्त। हाँ हाँ, बराबर बराबर। आवाज निकाल। Yeah, so that is called as snoring. तो वो वही बोलती थी कि जब भी मैं ड्राइंग रूम में जाती थी, mother was always busy reading and father was always sleeping. तो मैं जाके किससे बात करूँ, तो उसको ऐसे लगता था। सी यहाँ पे पिक्चर दिया है, that mother was always reading and father अपने बेस्ट कुशन पे ऐसे पाँव रख के आराम से स्ट्रेच करके सोफा पर, हाथ पे, अरे फेस पे ऐसा हैंकरचिफ कवर करके ये तो अच्छे से सो रहे थे वैसा। समझे यहाँ तक? एनी डाउट स्टिल हियर? नो मैम। ओके नो मैम। ओके। See, यहाँ पे they have given the little girl always found mother reading and father stretched on the sofa. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. ठीक है, तो वो बेचारी क्या करती थी, वो यहाँ पे जाके स्टूल पे कहीं पे तो कॉर्नर पे बैठ जाती थी. She used to sit on a stool, gravely watched him. What do you mean by gravely? Gravely का मीनिंग लिख लो बच्चा लोग. Gravely is seriously. तो वो seriously बैठती थी, and until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. तो वो कब तक ऐसे बैठी रहती थी, जब तक उसके डैड उठ ना जाते थे, एंड वो उसको टाइम नहीं पूछते थे कि बच्चा कितना बचा, तब तक वो ऐसी बैठी रहती थी। और वो क्या करती थी, देखो यहाँ पे लिखा है, देन लुक्ड एट हर। ओके, डोंट स्टेयर सो कीजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। तो हम लोग ने पहले ही देखा दैट शी वाज वेरी स्केयर ऑफ टॉकिंग टू हर फादर, so she just used to sit there, and whenever father used to ask something, she was like, just staring him and not replying. तो dad उसको बोलते थे that don't just stare, you look like a little brown owl. Owl पता है ना कैसे ऐसे आँख खोल के ऐसे बैठा रहता है। So वो उसके डैड वही बोलते थे, when you keep staring on me, it looks like you are a little brown owl. Clear till here? यस मैम। Okay. One day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. ठीक है? So one day what happened, she was not feeling well, she was feeling cold, and what did her grandmother suggested, that you should, it's your birthday, it's your father's birthday coming this week, sorry, next week, and I suggest you to make him a pin cushion. Okay, कि एक पिन कुशन आप बना लो आउट ऑफ येलो सिल्क, के जो येलो सिल्क घर पे पड़ा है ना, उससे यू कैन मेक अ पिन कुशन फॉर योर डैड. Laboriously, with a double cotton, the little girl stitched three sides. But what to fill it with? Okay, the laboriously is with a lot of difficulties and efforts. के बेचारी ने बहुत efforts दिए डैड के लिए गिफ्ट बनाने के लिए, एंड उसने क्या किया, तीनों साइड को स्टिच किया. ओके, एंड बट शी वाज कंफ्यूज कि उसके अंदर मैं भरूं क्या, बिकॉज आई वांट टू मेक इट एज अ क्वेश्चन, राइट? तो उसके अंदर या तो मुझे कॉटन या तो ऐसा कुछ सॉफ्ट मटेरियल डालना चाहिए, तो मैं क्या डालूं? शी वाज वेरी कंफ्यूज्ड. That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scrap. Okay, तो उसने क्या किया, ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, तो गार्डन में थी ग्रैंड मदर, तो उसको लगा मैं किसको जाके पूछूं, दादी तो बाहर है. तो शी जस्ट वैंडर्ड इज टू मूव हियर एंड देयर, ऐसा वैंडर्ड इज बाय चांस या वेंट इनटू. तो वो गलती से अपने मॉम के रूम में चली गए टू लुक फॉर स्क्रैप्स, के अगर कुछ ऐसा स्क्रैप मिल जाए, कुछ ऐसा. स्क्रैप इज समथिंग विच यू डोंट यूज, ऐसा स्मॉल पीस ऑफ मे बी यू कैन से क्लॉथ का या पेपर का, विच आर नॉट
often use is called as scraps. So she went into her mother room कि maybe mom के room में मुझे कोई scrap मिल जाए. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side. ठीक है, तो साइड टेबल पे उसको क्या मिल गया, बेड के साइड टेबल पे she find bunch of sheets and she thought wow इनका इनको मैं फाड़ देती हूँ and they would work as a rough paper and मैं इनको फिर वो cushion में अंदर डाल दूंगी. So she took those paper and उसने उसको तोड़ कर दिया, टुकड़े टुकड़े उसके ऐसे छोटे छोटे फाड़ दिए and she stuffed her case. Okay, then sewed up the fourth side. तो जो पिलो था उसमें डाल दिया and fourth side जो पेंडिंग था उसको भी उसने सिलाई कर दिया. That night, that was a hue and cry in the house. Okay, hue and cry is angry protest. मतलब क्या, that everyone, मतलब उसके घर पे everyone was angry, मतलब ऐसा चिल्लाना हो रहा था. And angry protest मतलब क्या, कि सब ऐसे चिल्ला रहे थे and सब गुस्सा. Father's great speech for the Port Authority had been lost. Rooms were searched, servants questioned. Finally, mother came into Kezia's room. तो क्या हो गया था, क्यों ऐसा हंगामा हो रहा था, क्यों एंग्री थे सब लोग? बिकॉज जो फादर का एक अथॉरिटी था, मतलब पोर्ट अथॉरिटी के जो मेन डॉक्यूमेंट्स थे, ग्रेट स्पीच था, मतलब मेन डॉक्यूमेंट्स जिसके ऊपर सब मटेरियल लिखा था, वो कहीं पे घूम गया था. एंड सारे रूम्स चेक कर लिए थे. एवरी सर्वेंट वाज क्वेश्चन. Okay. Finally, mother came into Kezia room. That finally, then mother she went into Kezia room. कि Kezia को मैं पूछ लेती हूँ. Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in our room. Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. तो कीजिया को जाके मॉम ने पूछा that तूने देखा था क्या कोई टेबल पे पेपर्स? तो she said yeah, I've seen them and I've used them as a scratch for my gift. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. Okay, तो उसकी mom shock हो गई that what? And she screamed at her and she said come down in the dining room right now. This instance मतलब क्या, right now at this particular moment. फटाक से आ जाओ डाइनिंग रूम में. And she was dragged down to where father was packing to and fro, hands behind his father was pacing to and fro, hands behind his back. Okay, तो वो तो बेचारी डर गई and मम्मा उसको खींच के लेके गई. ड्रैग डाउन इज खींच के लेके जाना. So मॉम उसको खींच के लेके गए and कहाँ लेके गई, ड्राइंग रूम में, where father was pacing to and fro. pacing मतलब pace is basically speed और to and fro मतलब यहाँ से वहां चलना. कभी हम गुस्से में होते हैं या कंफ्यूज होते हैं, जैसे वॉक करते हैं, छोटे छोटे राउंड्स लेते हैं. सो वैसे उसके डैड वहां पे कर रहे थे. हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, हाथ पीछे रख के. यहाँ तक समझा सबको? Mm, ओके, दक्ष आपको समझा बच्चा? ओके, या. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, 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 she whispered. Okay. तो फिर मॉम ने जाके सब बताया. तो डैड ने उसको पूछा that did you do that? Are you sure? Did you know आपने मेरे पेजेस फाड़ के उसका स्क्रैप बनाया? So again, as we have seen that whenever she used to talk to her dad, she used to get scared. So she's like, no, 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 dad, I didn't. Mother go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child's put to bed this instant. ठीक है, तो वो उसके मॉम को, मतलब जो उनकी वाइफ है, उनको क्या ऑर्डर देते हैं कि राइट नाउ गो टू हर रूम एंड फेच आउट दैट डैम थिंग. डैम थिंग मतलब क्या, वही जो कुशन बेचारी इतने प्यार से गिफ्ट में बना रही थी. तो डैड वाज लाइक go right now and bring that material, जो भी थिंग वो बना रही थी वो, and see that the child's put to the bed this instant. एंड मेक श्योर कि ये जो कीजिया है वो अभी बेड पे जाके सो जाए. आई डोंट वांट हर टू बी हियर. मेक श्योर दैट शी इज स्लीपिंग. Crying too much to explain, she laid in the shadowed room, watching the evening light
watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Okay, that she was very scared कि dad इतना भड़क गए मेरे पे, and she was crying too much, and she was trying to explain that why I have tore that pages, what was my purpose behind it, and she laid in the shadowed room. Okay, कि एक room का ऐसे अकेला सा corner सा part पे she was sleeping. Okay, shadowed room, watching the evening light making a sad little patterns on the floor. Okay, so what do you mean by sad little pattern? Sad little pattern is basically the sad atmosphere in the room. Okay, तो वो ऐसी दुखी बेचारी बैठी थी एक ही कॉर्नर पे बेड पे. Then father came into the room with a ruler in his hand. Okay, already she was scared. She was crying in her room, and then the father entered with a ruler. So she got more scared. I am going to beat you for this, he said. Oh, no, no, she screamed, hiding under the bedclothes. तो उसके dad तो clearly आके बोल देते that I'm going to beat you with this ruler. So she's like, oh no, no, and she started screaming and she started hiding herself into the bed clothes. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. तो वो जो बेड क्लोथ से खुद को ढक रही थी उसको डैड ऐसा साइड में कर देते हैं एंड ही सेज के गिव मी योर हैंड एंड आज तो आपको मार ये रूलर से पड़ेगी ही एंड आज के दिन ही आई विल टीच यू फॉर वंस एंड फॉर ऑल that you should never touch things which does not belongs to you. And she starts explaining, but it was for your birthday. And then वो बेचारी डर के क्या बोलती है कि but dad, whatever I have done, it was for your birthday. Down came the ruler on her little pink palms. Okay, तो जब डैड ने सुना कि ये तो उसके बर्थडे के लिए कर रही थी तो क्या किया डैड ने रूलर नीचे की एंड लिसन टू हर पिंक palms. ओके, पिंक palms मतलब क्या, जो ऐसे उसका जो हाथ था वो नीचे कर दिया एंड उसका बात सुना डैड ने पूरा explanation. As later when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. And after hours, what happened? उसको अभी मार पड़ी नहीं पड़ी वो तो हमें पता नहीं. But what happened? Grandmother had wrapped her in a shawl. You know, usually happen अगर आपको कभी पापा मम्मी से डांट पड़ी होती है ना तो दादा दादी हमें बहुत प्यार करते हैं. They are like कोई बात नहीं बच्चा, नेक्स्ट टाइम आप मत करना. बट वो हमें हमेशा ऐसा केयर करते हैं. So in the similar way that happened with Kezia as well, कि उसकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने उसको ऐसे शॉल में रैप कर दिया था कि बच्चा डोंट क्राई, इट्स ओके, एंड रॉक्ड हर इन हर रॉकिंग चेयर. रॉकिंग चेयर पता है वो ऐसे आगे पीछे होती है मोस्टली. आप लोग ने सीरियल्स में देखा होगा जो चेयर आगे पीछे होती है ना, आप बैठते हो एंड इट यू नो Hmm. या दैट इज कॉल्ड एज रॉकिंग चेयर. तो उसके ऊपर दादी बैठी थी एंड शी वाज कामिंग हर डाउन दैट डोंट क्राई, इट्स ओके. एंड देन द चाइल्ड क्लंच टू हर सॉफ्ट बॉडी एंड फिर वो जो चाइल्ड थी कीजिया उन्होंने उसको ऐसे गले टाइप लगा लिया. क्लंज इज टू attach yourself to someone. Okay, clutch means to attach yourself to someone. तो उसने ऐसे दादी को एकदम ऐसे गले में लगा लिया. What did God, why, what did God made fathers for? She sobbed. Okay, that now she was very angry and she is asking her grandmother that why did God made fathers? मतलब सी उनको कितना गुस्सा था कीजिया को कि वो डायरेक्ट पूछते कि भगवान ने बनाया ही क्यों पापा को. She sobbed is ऐसे थोड़ा गुस्से में एंड थोड़ा रो रो के she was asking. Yours is a clean Here is a clean hanky, darling. Blow your nose. अभी रो रो के कैसे उसको ऐसे सब नोज उसका फ्लो हो रहा था तो उसकी दादी ने ऐसा क्लियर हैंकी दिया that don't cry, take this clear hanky and blow your nose. Go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. So she's telling that go sleep, you'll forget everything. And I tried to explain to your father, but he was very
very angry and he was not in the mood to listen. So I'll make sure that I tell him whatever happened कि आपने ऐसा क्यों किया, tomorrow morning, not today. But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. But the child शी नेवर फॉरगॉट. जब भी वो अपने डैड को देखती थी, वो क्या करती थी, अपने दोनों हाथ ऐसा पीछे कर देती थी. एंड शी हैड अ रेड कलर फ्लू ऑन टू हर चीक्स. मतलब क्या, उसको ऐसे गुस्सा आता था उसके डैड को देख के ऐसा, दैट हर चीक्स यूज्ड टू टर्न रेड. The McDonald's lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. McDonald क्या है, और एक न्यू एंट्री, वो उनके नेबर्स है. ठीक है, तो वो वही बोल रही है कि जो हमारे नेबर है ने अंकल मैकडोनल्ड, वो कितने अच्छे हैं एंड उनके तो 5 चिल्ड्रन हैं एंड वो हमेशा अपने बच्चों के साथ टैग खेलते हैं ना. व्हाट डू यू मीन बाय टैग? टैग इज बेसिकली, देखो वहां पे मीनिंग दिया है, चिल्ड्रन गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर. अब हमारे भाषा में बोले तो हम जो बचपन में पकड़ा पकड़ी खेलते थे ना, वो. तो वो जो मैकडोनल्ड थे, वो अपने 5 बच्चों के साथ हमेशा पकड़ा पकड़ी खेलते थे. तो वो अपने विंडो के गैप में से कीज या ये सब चीजें देखती थी. The father with the baby, Mao, on his shoulders, 2 little girls hanging onto his coat pockets, ran round and round the flower beads, shaking with laughter. ठीक है, यहाँ पे फोटो है, देखो. तो एक बच्चा उनके ऊपर सिर पे रहता था. ही इज मैकडोनल्ड अंकल जो उसके नेबर्स है. एंड यहाँ पे देखो कीजिया है अपने विंडो के ब्रैकेट में से उनको देख रही है एंड 2 बच्चे उनके पॉकेट्स खींच रहे हैं एंड 2 आजू बाजू में खेल रहे हैं. तो यही डिस्क्रिप डिस्क्रिप क्या बोल रही हूँ मैं, यही दिखाया है यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन दिया है, देखो. that yeah, 2 fathers with the baby, Mao on his shoulder, एक उनके shoulder पे है, 2 little girl hanging onto his coat pocket, and other round the flower beds shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. Hose का picture नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है. So hose is basically ऐसे आपको पता, आप लोग ने देखा होगा शायद, ऐसे वायर जैसा होता है, ऐसे 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 होस होता है ऐसे. इट इज समथिंग लाइक दिस. तो एक बार क्या किया बच्चे लोगों ने, उसके फादर को दिया. तो वो उन्होंने अच्छे से कैच भी किया एंड दे वर लाफिंग. तो वो यहाँ पे वही अज्यूम करती है कि अगर यहाँ पे मेरे डैड होते एंड अगर मैंने उनको ऐसे होश दिया होता, तो वो तो मेरे पे कितना भड़क जाते. बट यहाँ पे मैकडोनल्ड अंकल तो कितने स्वीट है, उन्होंने तो वो कैच भी किया एंड अगेन ही इज लाफिंग. एट दैट टाइम ही वाज नॉट एंग्री ऑन द किड्स. तो वही वो फिर क्या करती है, वो अपने डैड को दूसरे के डैड के साथ कंपेयर करने लग जाती है. समझा यहाँ तक? एनी डाउट टिल नाउ? No. Okay. Next, then it was she decided that were different sorts of father. सडन ओके, तो तब उसने डिसाइड कर लिया था कि कितने सारे अलग अलग टाइप के फादर्स होते हैं वर्ल्ड में. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to the hospital. तभी क्या हो गया, उसकी जो मॉम थी कीजिया, she was not feeling well and she became ill. तो उसकी मॉम एंड ग्रैंड मदर, उसकी दादी, दोनों हॉस्पिटल गए थे. The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. That was all right in the daytime. ठीक है, तो वो अकेली थी घर पे क्योंकि उसके डैड भी ऑफिस गए थे. तो घर पे वो सिर्फ जो उनके कुक है एलिस, उनके साथ वो घर पे थी. तो डे टाइम मतलब पूरा दिन तो चल गया, वो उनके साथ थी. बट while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. पर जो रात का टाइम आया एंड जब जो उनका कुक था एलिस, वो जब उनको सुलाने की कोशिश कर रहा था, so now she suddenly got afraid. कौन अफ्रेड हो गया? कीजिया. कीजिया एकदम अचानक डर गई. क्यों? Let us see. What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmare and then Granny takes me into her bed and I can't stay in the dark.
it all gets whispery. Okay, तो वो एलिस को बोलती है, जो उनके कुक है उनको, कि what if I get a nightmare. Nightmare मतलब क्या होता है, एक बैड ड्रीम. तो वो वही बोलते हैं कि मुझे है ना हमेशा नाइट्समेयर आते हैं, एंड whenever मुझे ऐसा बुरा सपना आता है, whenever I have a bad dream, then Granny, she takes me onto her bed, she calms me down, and she makes sure that I am okay. But now Granny is not there over here, so what will I do? I can't stay in the dark. वो एलिस को बोल रही है. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. So what Alice is saying, that don't get scared, dear. I am there over here, and just pull off her socks. मतलब वो उनके socks ऐसे निकालते हैं, and वो बोलते हैं that you don't scream and wake your poor pa, कि अगर आपको डर भी लगे ना, तो आप ऐसे चिल्ला मत लेना, वरना आपके जो डैड है वो उठ जाएंगे. समझा यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, बट उसको हमेशा की तरह जो उसको बुरा सपना आता था, आज भी उसे वही सेम बुरा. Hello. अ बचर, बचर मतलब क्या? बचर मतलब पता है किसी को क्या होता है? हाँ मैम. ओ, क्या? मैम जो बकरी काटने वाला. या जो एनिमल्स को काटता है, जो बकरी हैन काटता है ना, उसको बचर बोलते हैं. तो उसको हमेशा एक सपना आता था, नाइटमेयर आता था, कि एक बचर होता है, वो उसके पीछे है ना नाइफ और रोप लेके भाग रहा है, एंड वो हमेशा उसके नियर एंड नियर आता है, स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, ऐसी डरावनी स्माइल देके वो उसके पास आता है. ये सपना उसको रोज आता था. while she could not move, could only stand still, crying out grandma grandma, and वो डर जाती थी सपने में, एंड वो सडनली उठ के क्या चिल्लाती थी, ग्रैंडमा ग्रैंडमा वैसे. she woke shivering to see father beside her bed, a candle in his eye. एंड जब वो उठी तो शी वॉज शिवरिंग, वो एक तो ऑलरेडी डर गई थी ना एलिस, तो वो शिवर कर रही थी. एंड उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि उसके बाजू में कौन थे, उसके फादर थे, एंड ही हैड अ कैंडल इन हिज हैंड, और वो साथ में उनके कैंडल था वैसा. व्हाट्स द मैटर, ही सेड. तो उन्होंने पूछा, व्हाट हैपेंड, व्हाई डिड यू सडनली वेक अप, व्हाट्स द मैटर. ओ, अ बचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी. तो वो अभी डर जाती है ना, तो वो ऐसे पॉज पॉज में बोलती है दैट एक बचर होता है, एक नाइफ होता है, आई डोंट नो, आई वांट माय ग्रैनी. He blew out the candle, bent down, and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to a big bedroom. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. Okay, बच्चा लोग, सेशन खत्म हो जाएगा अभी 1 मिनट में, तो I'll stop over here, and अभी वापस आप लोग ज्वाइन करो, and it may take 1 to 2 minutes to get ये रिकॉर्डिंग सेशन है ना, तो उसको सेव होने में 1-2 मिनट लगेगा, तो आप लोग 1-2 मिनट वेट करो एंड फिर ज्वाइन करो, ठीक है? वापस द सेशन इज गेटिंग ओवर बिकॉज 40 मिनट्स हो गया ना इसके लिए. ठीक